Hey everyone, and welcome to another episode of Net Picking, which is Badminton Nation's new video podcast on the most important happenings in Indian and international badminton. I'm Jaideep Vaidya, and with me is senior journalist Abhijit Kulkarni, who has covered badminton for over 2 decades. Hi Abhijit, how are you? Hi Jaideep, I'm fine. And our special guest today is three-time national champion and world number 32, Saurabh Verma. Hi Saurabh. Hi, Jaideep. Thanks for joining us. So today we're going to discuss the new revamped structure in Indian domestic badminton. After more than a year, the domestic circuit is set to resume in April with the two senior ranking tournaments. We're finally going to see some badminton in India after a long time, and I'm sure we all can't wait till April. So, according to this new structure announced by the Badminton Association of India last year, ranking tournaments will be classified into three levels. Level 3 will have 6 BAI series tournaments in a year. Level 2 will have 4 BAI Super Series tournaments. And level 1 will have 2 BAI Premier Super Series tournaments in a year. And of course, the crown jewel in the domestic calendar will always be the national championships. Now, BI has also increased the prize money for these tournaments. Level 3 will come with the total prize money of rupees 10 lakh. For level 2, it will be 15 lakh. And for level 1, it's 25 lakh. The senior nationals, on the other hand, will have a prize money of 50 lakhs. So, Abhijit, can you start off by just giving our viewers some context here, like how big or drastic are these changes compared to what's been going on till now? I think this is the first time we have changed the prize money since '97 when the prize money concept was introduced with the All India ranking when Prakash Padukone became the executive president and he started with the 4 lakh prize money tournament, 5 lakh prize money tournament. And from '97 to 2020 to have the same prize money in a domestic structure was like I don't know what was BI thinking that they kept the prize money at the same level at 5 lakh. So 97 5 lakh in 2025 lakh doesn't make sense. But they continued with that and nobody bothered to change that structure. Now, if you see the way the prize money used to be given, and you said 8% of the prize money, so you play for a 5 lakh tournament, you get about 40,000 rupees as your prize money, and for which you play about 8 matches. If you play qualifying, sometimes you played 12 matches in qualifying and came and played. And I think one of the major reasons why that even the middle level players stopped playing was this: to play for a week, make some 20-25,000 rupees, and then it made no sense for them to play here than to spend money on the international circuit, because if you are not the top player you don't get to get government sponsorship or BA sponsorship. So I think this was a much needed reform in Indian badminton. It was planned last year, but because of COVID it was delayed by a year, but I am happy that they have done it. And I think it would be very important step for the players who depend on the domestic prize money to play international, because that is where the main difference is going to be. Right. And is there any difference in how you qualify for these tournaments, or has that not changed? Uh, so there will be a change. Like the qualifying for the top two levels would be restricted. The number of qualifiers will be restricted. Earlier there used to be a 256 draw for just qualifying for every tournament, and it used to be crazy. And you would play three matches in a day. Now also what they are doing at the lower rung, where the qualifiers used to be only 8, they are bringing in 32 qualifiers, so a draw will be 64, whereas there would be 32 qualifiers, which means you have a reason to play qualifying. Earlier players used to say you come to play qualifiers and go home. It made no sense. Like 256 draw, you played 7 rounds just to qualify, and by the time you were so dead tired that there was no point in playing the main draw. Right. So Saurabh, let's bring you in here. What are your thoughts on this new revamped structure? I think BI has announced the structure and I think वो काफी अच्छा भी है और अभी जो प्राइज मनी इंक्रीज किया है उन्होंने तो वो भी काफी हेल्पफुल होगा जो प्लेयर्स हैं क्योंकि अभी
काफी टाइम से जो है बीएआई ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी नहीं कराए हैं, और जो प्लेयर्स इंटरनेशनल खेल रहे हैं, तो अभी आप देखोगे कि जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसमें सिर्फ टॉप 32 या टॉप 35 प्लेयर्स के ही टूर्नामेंट हो रहे हैं जो जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए रेस में है। तो बाकी के जो प्लेयर्स हैं हमारी कंट्री में जो बिलो बिलो 35 या बिलो 50 में है, उनके लिए कोई टूर्नामेंट पिछले 1 साल में हुआ ही नहीं। तो ये जो टूर्नामेंट्स होंगे उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, और एज़ वेल एज़ हम लोगों के लिए भी, जैसे कि कभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे हैं या कोई टूर्नामेंट अभी जैसे आप देख रहे हो कि बहुत अनसर्टेनिटी है कि लास्ट मोमेंट पे टूर्नामेंट कैंसिल हो रहा है। तो अगर वो टूर्नामेंट कैंसिल होते हैं तो हम डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल सकते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट्स होना भी इम्पोर्टेंट है, ताकि एक कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहती है। सर, और लेकिन आपका ये प्राइज मनी स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहना है? मतलब हम लोग इससे पहले भी एक दो बार बात कर चुके हैं, वह जहाँ पे आपको जब फॉरेन फंडिंग बीआई से नहीं मिलता है, तो आपको जी। प्राइज मनी और जो भी जिसके पास जॉब है, जैसे आप जैसे प्लेयर्स के पास जी। जॉब भी है पेट्रोलियम का, लेकिन कुछ जी। प्लेयर्स है जिनके पास पेट्रोलियम जॉब्स भी नहीं है, तो वो भी जी। ये प्राइज मनी यूज करते हैं। तो ये पूरा प्राइज मनी चेंज करने से आपको क्या लगता है कि इससे ज्यादा प्लेयर्स खेलेंगे डोमेस्टिक सर्किट, और इसका एक्चुअल इंटरनेशनल सर्किट पे कितना फायदा होगा? आई थिंक जो जो टूर्नामेंट की प्राइज मनी जैसे आप 20-25 lakhs बता रहे हैं, तो अगर वो टूर्नामेंट हम खेलते हैं तो विनर वुड गेट अराउंड 3.5 lakhs या 4 lakhs, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो मैं अपने ओन पे खेल रहा हूँ, तो अगर आप एक टूर्नामेंट यूरोप का खेल रहे हो, तो यू विल नीड अप्रोक्सीमेटली बिफोर कोविड सिचुएशन जो मैं बता रहा हूँ कि 1 and 1.5 lakh अप्रोक्सीमेटली लगता था, बट अभी जो टूर्नामेंट आप खेलोगे वहाँ पर कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि आपको ऑफिशियल होटल में रुकना है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और आई थिंक अगर प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से बात करें तो यू विल नीड अराउंड 2-2.5 lakhs टू प्ले 2 or 3 टूर्नामेंट्स इन यूरोप। तो अगर आप जीतते हो डोमेस्टिक सर्किट, आप जीतते हो, तो यू विल गेट सम अमाउंट कि आप एक या दो टूर्नामेंट यूरोप के अफोर्ड कर सकते हो। बट उसके अलावा भी एक प्लेयर से काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं जो कि उसके न्यूट्रिशन में जाते हैं, जो उसके ट्रैवलिंग जो डोमेस्टिक सर्किट में वो कर रहा है, जो फिजियोथेरेपी वगैरह होती है। तो आई थिंक थोड़ा तो बूस्ट मिलेगा इससे कि आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल सकते हो, बट to play more international tournaments, I think we need a good structure कि मतलब जो सेकंड बेंच प्लेयर्स हैं उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलें, और जो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे, उनको भी अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने की मिले। डेफिनेटली दिस प्राइज मनी विल हेल्प, बट दैट इज फॉर 1 or 2 टूर्नामेंट। बट आप अगर थ्रू आउट द ईयर की बात करोगे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने की, तो यू विल मिनिमम 8 to 10 टूर्नामेंट्स आप खेलोगे, उसके बाद आपको थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, देन यू विल गेट टू नो कि आप इंटरनेशनल में कैसा अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हो, और कैसे वर्ल्ड रैंकिंग में ऊपर आ सकते हो, और कैसे टूर्नामेंट जीत सकते हो। So Abhijit, Saurabh spoke about how players from the second rung should get opportunities to play. So with this new structure, like earlier, BAI used to categorize certain tournaments as selection tournaments for international events. So is that changing with this new structure? So will it only be level one that will be for the selection tournaments, or how will it work? So I don't think now like the ranking system will completely change. Earlier, what used to happen is every tournament you had the same ranking points. Now the ranking systems will change. So level three will have lesser ranking points. Level two will have more ranking points. Level one will have more ranking, the highest ranking points. So I think now BI can actually pick players based on the ranking also. uh, what they did last year before the BATC, the Badminton Asian Team Championship, is was to do trials. That was the first time where BI came up with the concept of trials.
So I think that would be a better system where you pick players based on ranking or on a system on form, and then take a trial before a team championship selection. All other selections anyway don't matter because you get entries into the international tournament based on your world ranking. So for all other tournaments, it doesn't matter. The only thing it will be mattering will be the Badminton Asia Team Championship and the Thomas Uber Cup. And whenever there is Asian Games, because it is a team event. But otherwise, I don't think there is something called a selection issue which will come in the senior circuit. What I am looking forward to is, because it will be a selective tournament at tier 1 and tier 2, maybe more top players will come down and play, because also there's an enhanced prize money, plus there will be a controlled week to play. So that would help the second rank because they will get to play more often with these players. What was happening in the last 3 4 years was, even some of the top players were not playing nationals, so the exposure against the top players was reduced. In the last 2 3 nationals, when all the top players came, we also got to know the level of development of the junior players, because if you are not testing them against the top players, we don't even know. Even if you are winning a domestic circuit, we had no clue whether they were good enough to go and play the international circuit. And a lot of them got exposed who were playing very well at the domestic level when the top players came. So I think it's a two pronged thing. There's a increased prize money which will help, but I hope that at least for the tier 1 event, if the top players start coming and playing, it will also enhance the overall level of the second rank, which Saurav was saying. How do you know you are good enough to go and spend so much money? Like, if you have to play 10 tournaments, you are almost spending about 15 to 20 lakh rupees. So how do you know you are good enough? You can test yourself in these tier 2 tier 1 events and then decide what to do. Right. And Saurabh, so we'll have these two tournaments in April, the senior ranking tournaments. So earlier, sometimes what used to happen was, if they have like two tournaments in a row, one used to be like, say, for example, in Panchkula, and the other will be in Hyderabad. So it's difficult to, travel across Yeah. the country. Yes. So in that sense, that, what do you think, like, BI can do in terms of scheduling and, the location of these tournaments? आई थिंक पहले तो ऐसा नहीं होता था, जब जो जूनियर के टूर्नामेंट होते थे वो दो अलग सिटीज में होते थे, बट इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता था कि सपोज वन यूज टू हैपन इन चेन्नई एंड अदर वन इन बैंगलोर और कोचिंग. सो ये डिस्टेंस ज्यादा ज्यादा दूर का नहीं होता था कि आप अगर आप मैच खेल रहे हो, सपोज सेमीफाइनल और फाइनल खेला है आपने, देन अगेन नेक्स्ट डे आपको ट्रैवल करना है, तो उतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता था. बट पंचकुला से नॉर्थ से साउथ में आना, वो थोड़ा हेक्टिक होता है. बट स्टिल बीआई ने कुछ सोचा होगा इसके बारे में कि मतलब ये जो इतना डिस्टेंस है, उसके बारे में क्या किया जा सकता है, क्योंकि अगर पास की सिटीज में अगर आप सपोज जैसे यूरोप में जैसे बीडब्ल्यूएफ करते हैं कि यूरोपियन सर्किट में स्विस और जर्मन पास पास में है तो वहाँ लगा दिया. एंड देन एशिया में जब टूर्नामेंट हो रहे हैं तो मलेशिया एंड सिंगापुर 3 टूर्नामेंट एक साथ कर दिए. तो सिमिलरली अगर बीआई भी इस तरह से करेगा तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ सोचा होगा इसके बारे में. तो आई डोंट नो कि किस तरह से वो इसको हैंडल करेंगे. बट सर अगर एक पास और में है चीज तो ज्यादा अच्छा है. सर एक और चीज है, मतलब मुझे याद है, मैं जब 2005-6 में नेशनल्स कवर करने या कोई भी नेशनल रैंकिंग कवर करने आता था, तो कई बार जी. मैचेस रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे भी खत्म होती थी. जूनियर की तो कभी कभी आप ढाई जी बजे हाँ. 3 बजे मैच खेल के फिर 8 9 बजे मैच खेलना शुरू हो जाते थे. डेफिनेटली. हाँ जी. आपका आपके एक्सपीरियंस में ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कितना चेंज आया है, कितना इजी हो गया है अब डोमेस्टिक भी खेलना, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम की अगर मैं बात करूं, जूनियर में तो मेरे ख्याल से जो हैदराबाद में ऑल इंडिया हुई थी लास्ट टू लास्ट ईयर, जो मैंने देखी थी, तो उस टाइम भी काफी लेट नाइट मैचेस हुए थे, क्योंकि इंट्रीज ही इतनी होती हैं, और अगर आप 2 या 3 वेन्यूज भी रखते हो, स्टिल मैचेस इतने होते हैं कि लेट नाइट होती है. इवन इफ यू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 8 o'clock, जो मैचेस हैं वो रात को 9 10 11 12 बजे तक, फर्स्ट 2 डेज और 3 डेज क्वालिफाइंग के, वो तो ऐसे होते हैं कि आपको
मैच कभी भी आ जाएगा, और अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो इमीडिएटली इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो आपके लिए वेट करें, तो वॉक ओवर होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। बट सीनियर सर्किट में ऐसा ऐसा अभी तक जो जितने टूर्नामेंट मैंने खेले हैं, जैसे कि अगर बैंगलोर और हैदराबाद जहाँ पर मैं क्वालिफाइंग करके खेल रहा था, तो वहाँ पर भी थोड़ा डिले होता है, बट सीनियर में उतने उतने ज़्यादा लेट नाइट मैचेस नहीं होते, क्योंकि लिमिटेड हो जाता है। लेकिन अभी अभी लास्ट 1-2 साल में सीनियर में भी काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज आने लगी हैं, जो कि अच्छी बात है। बट जैसा कि आप बोल रहे हो कि लेट नाइट मैचेस हैं, उसके लिए तो फिर अगर आप वेन्यूज भी बढ़ाते हो, जैसे यहाँ पर जो जूनियर टूर्नामेंट हुआ था वो 2 वेन्यूज पे हुआ था, साई गोपीचंद और गोपीचंद अकेडमी में। तो स्टिल मैचेस जो थे 8-9 कोर्ट्स होने के बावजूद भी रात को लेट हो रहे थे। तो आई डोंट थिंक कि इसके लिए कोई सॉल्यूशन क्या होगा, मुझे उसका नॉलेज नहीं है। बट जो मैचेस हैं वो भी आई थिंक 30 पॉइंट्स और 15 पॉइंट्स के हैं, क्योंकि सीनियर का जो क्वालिफाइंग मैंने खेला था वो इट वाज अराउंड 15 पॉइंट्स के 3 सेट्स। तो टोटली ऐसा था कि 2 डिफरेंट टूर्नामेंट्स आपको खेलना पड़ रहा है। फर्स्ट यू हैव टू प्ले 7 और 6 मैचेस ऑफ 15 पॉइंट्स क्वालिफाई करने के लिए, and then when you get qualified, then you have to again play 5 to 6 matches to win the tournament, and that is about 21 points. सो हाउ कितना डिफिकल्ट होता है, मतलब आप इंटरनेशनल खेलते हो, क्वालिफाइंग खेलते हो, एक दिन में क्वालिफाइंग जी खत्म हो जाता है। बट ये जो जी है कि 7 मैचेस क्वालिफाइंग के खेलो, फिर 6 मैचेस, वो जो मेंटल और फिजिकल ड्रेनिंग आउट है, आपको लगता है हम्म। कि क्वालिफाइंग भी रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए अब ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अलग कर रहे हैं तो? जैस अब कोई प्लेयर अगर सपोज अगर रैंकिंग में नहीं है कोई प्लेयर, अगर जैसे बीआई ने बीच में एक नेशनल्स के लिए निकाला था कि कोई प्लेयर जो वर्ल्ड रैंकिंग होल्ड करता है टॉप 50 में है, तो उसको डायरेक्ट मेन ड्रॉ में एंट्री मिलेगी, इस तरह से। तो अगर ऐसा कुछ रूल है तो फिर जो प्लेयर इंटरनेशनल खेल रहे हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। बट क्वालिफाइंग होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि आप जैसे अभी बीडब्ल्यूएफ के जो टॉप 32 टूर्नामेंट है उसमें अगर आप देखेंगे तो पॉइंट्स का मार्जिन काफी ज्यादा है। अगर आप सुपर 1000 के पॉइंट्स देखोगे और सुपर 100 के, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच सुपर 1000 लेवल। और जो सुपर 1000 में है उनके लिए काफी इजी है कि अगर वो 3 सुपर 1000 में से अगर एक सुपर 1000 में भी एक राउंड या 2 राउंड जीतते हैं, so they can maintain their ranking throughout the year in top 30. या सिमिलरली बीआई में भी अगर देन इट विल बी अनफेयर कि मतलब जो नीचे वाले प्लेयर हैं वो नीचे ही खेल रहे हैं और बहुत टाइम लग रहा है। और पहले ऐसा होता था कि अगर ऑल इंग्लैंड में आप खेल रहे हो तो ऑल इंग्लैंड में क्वालिफाइंग होता था, तो वहां से 8 प्लेयर्स जो हैं जो रैंकिंग के बाहर हैं, इफ दे गेट चांस टू प्ले इन क्वालिफाइंग, दे कैन आल्सो क्वालिफाई एंड प्ले इन मेन ड्रॉ। वो एक चीज है। और डेफिनेटली मेंटली और फिजिकली काफी ड्रेनिंग होता है वो, कि अगर आप एक दिन में 2 मैच खेल रहे हो 3 दिन तक, एंड देन सडनली आप मेन ड्रॉ में जाके अगेन आपको पहले दिन 2 मैच खेलना है, फिर आपका वो मैचेस की जो इंटेंसिटी वो भी बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे आप क्वार्टर सेमी में पहुंच रहे हो, तो इट विल नॉट गोइंग टू रिड्यूस व्हेन यू कम फ्रॉम क्वालिफाई। तो वो एक चीज है। सो इस बार अच्छा किया है, मतलब अभी तक ऑफिशियली शेड्यूल्स बाहर नहीं आए हैं, पर जहां तक मुझे पता है कि अब जो नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट्स होगा वो 5 दिन के जी बजाय 8 दिन होगा। सो जी आपको हर जी। रोज एक ही राउंड खेलना पड़ेगा मेन ड्रॉ में एटलीस्ट। और हुँ, इस बार अब तो ये भी कर रहे हैं कि फिक्स टाइम पे ही मैच चालू होगा, तो आप ये हुँ, जो पहले होता था कि आप आके बैठे हो और 2 घंटे बैठे ही हो नेक्स्ट मैच खेलने के लिए, राइट, राइट। तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास हर मैच के बीच में वो कम से कम 20 या 25 मिनट का डिले रखेंगे, तो 20-25 मिनट हुँ, कितना भी लेट हो जाए तो शेड्यूल तो अपने शेड्यूल पे चलेगा, हुँ, तो प्लेयर कैन आल्सो प्लान राइट, देमसेल्व्स बेटर, व्हिच इज राइट। अ गुड stance that BI wants to take. The one हुँ, of the challenge is going to be, like Saurav said, कि you now need minimum of 10 courts, otherwise टूर्नामेंट का शेड्यूलिंग करना मुश्किल हो रहा है with the मुश्किल number है। of entries, because जूनियर में तो हुँ, 1000 से ज्यादा एंट्रीज है राइट बहुत नाउ। ज़्यादा एंट्री है। आई थिंक सीनियर में भी अब 600-700 एंट्रीज आने लग गई है सीनियर में विथ भी ऑल। बढ़ गया है, और जूनियर में तो काफ़ी मैंने देखा हुआ था, क्योंकि मैं यहीं पे अकेडमी में ही था उस टाइम पे।
तो पहले के 2 दिन तो ऐसा बिल्कुल एक क्राउडेड रहता है, पूरा पैक्ड रहता है कि आप क्योंकि डेवलप हो रहा है, लोग लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं बैडमिंटन में, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट भी बढ़ रही है। बट फर्स्ट 2-3 डेज मिनिमम जो रहते हैं क्वालिफाइंग के, अपार्ट फ्रॉम दैट मेन ड्रॉ के फर्स्ट टू जब तक कि आप प्री क्वार्टर क्वार्टर स्टेज में नहीं पहुंच रहे, तब तक काफी मतलब हेक्टिक रहता है, और शेड्यूलिंग भी लेट होती है अब। लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि 8 दिन का कर दिया है, पहले 5 दिन होते थे, तो काफी रात को भी मैचेस होते थे, बट अब टाइम की लिमिट अगर बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली इनफ रेस्ट भी मिलेगा, और जैसे अगर कोई अब इतनी प्राइज मनी के बाद अगर कोई टॉप प्लेयर्स भी अगर खेलते हैं, तो उतने क्वालिटी के अगर मैचेस होंगे तो डेफिनेटली दे विल नीड गुड रेस्ट एंड इनफ टाइम टू रिकवर फॉर द नेक्स्ट मैच. So, Saurabh, do you know how it works in other countries like, say, Japan or Malaysia, Indonesia? How is their domestic structure, and is are there any similarities, or is it completely different? Oh, looks like Saurabh got cut off. So, Abhijit, can you tell us, like, how does it work in other countries, and the domestic structure, and how different is it from what we have here with this new structure? See, a lot of countries have different structure. Like in Europe, most of it is a domestic league structure where you play a lot more domestic league. In China, Japan also, they play a lot of domestic tournaments. And at the end of the day, every year, at the start of the year, these countries, especially Japan, Korea, and all, select their national team, which is there for the whole year. And only those players get to even be funded on the international circuit from the various countries. What one area which I think Japan and all these are doing a really good job is having more team events, because I think one of the area we are lacking is doubles, and doubles because everybody is playing individual events. But if you put in a structure where there are also some team events, then automatically all states will have to start building their doubles pairs also, Right. which is not happening in India. We are still individual players playing their own tournaments, with the states having very little involvement, because the only thing the state is bothered about is the zonals and the nationals, Right. and everything else is on the player. So I think while that is great because of player benefits, that if we want to have an overall development in Indian badminton, we need to get more team events in, where the states have to invest in their players, or like when Mr. Akhilesh Das Gupta, the late Akhilesh Das Gupta, who was the president, he was planning a domestic league structure on the lines of PBL for junior Okay. players, which would have helped us create that structure where you have constant tournaments. There's somebody investing in you to play better. Because right now, what is happening is there is little investment in you playing better. It's only the player, the player's coach, and the player's parents who are pushing you to play better. But as a system, if you have more team events, you can actually create that structure where the state or an employer or somebody is investing in you to play better. So I think that is one area where we still lack in the domestic structure. If BI can look at that option and have 2 or 3 events which are team events, or have a competition between states, I think that would help us a lot more. Right. So, I mean, still a way to go, but do you think that this is a good start by BI? Yeah, it's a definitely a good start. Okay. Okay. So, There was another all, good start where BI had planned specific doubles tournaments. Every year there used to be 2 doubles events where no singles used to happen. I think we need to bring that back also. right. Right. All right. I think that's all we have time for today. Thank you so much, Abhijit, for joining us. And thank you to all our viewers. We'll be back again very soon with another episode of Net Picking. Until then, take care.